आज मैं बस मैं बहुत दिनों बाद आज मंदिर आया यहाँ। तो एंट्री पे ही मुझे अनुराग अंकल ने कह दिया कि भाई आज आपका सत्संग है। और मुझे शुरू से ही जब भी किसी ने सत्संग करने के लिए कहा है, मुझे ये लगता है कि गुरुजी का हुक्म है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, एंड आई गो इनटू डिटेल्स व्हाई। So सबसे पहले I'll share my journey with Guruji. 2013 was when my mom, she's from Delhi, my family is from Delhi, so she used to go to Guruji's temple. और वो कहती थी कि गुरुजी हैं और आपको भी देखना चाहिए, जाना चाहिए गुरुजी। तो उस समय I was here, तो मैं तो इतना ज़्यादा कभी मंदिर जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैं अपने आप को नहीं कंसिडर करता। Then 2013 I got married. My auntie, my wife was, so she happened to go to Delhi in 2014. That was the first time she went to Guruji Mandir. And then the same year later, I went to Guruji Mandir. And I had a very, the experience was just something I cannot explain. I'm a very observant person. I observe things. What I observed over there was not normal. And वहाँ मुझे एक लॉकेट मिला गुरुजी का। वो बाय द टाइम मैं गाड़ी तक गया वो लॉकेट गायब हो गया। वहाँ कुछ अलग अलग सी चीज़ें मुझे दिखी, तो मुझे आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। ऑब्वियसली तब तक कोई फेथ तो नहीं था मेरा, पर मैंने कहा बहुत अलग सी जगह है ये, बहुत यहाँ ये दिस इज़ not like a traditional temple where there is a pandit and doing all those rituals. So I took that as an experience and I came back to US and I was told कि यहाँ उस समय हम एडिसन रहते थे, तो एडिसन में मंदिर है। So me and my auntie, we just went to Edison. We didn't know about the timing. It was a Sunday. We went and we sat in the temple and my auntie just started crying. She had, I don't know, like a spiritual connection with Guruji, and she just started crying. And I thought it was embarrassing because she's crying and everybody's looking at her. But as you all know, in this temple, we don't judge anyone. And this is all the connection that you have with Guruji. So even until then, it was not clear why this was happening, what was happening. But obviously, ये सब गुरुजी की हुक्म से हो रहा था. We were going through some tough time. My auntie was not able to get her visa, work visa, and जब वो यहाँ आई हम शादी करके, तो obviously मैंने बोला नहीं आपका प्रोफाइल अच्छा है, you will be able to work here, don't worry. She was working in India, very good job, and obviously that did not happen. First year that did not happen. Second year she was not able to get her H1. तो मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी का कोई और हुक्म है, आप you go back to school. So she basically went for her master's degree, which is, in the hindsight now I see, she never had to get an H1 to work in this country. She directly got her green card. Guruji never wanted her to go through that process. I don't know why, but that was what we learned from that process. कि गुरुजी चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, और फिर उसके बाद मेरे ग्रीन कार्ड में बहुत डिलेज थे. आई हैव बिन my file was with USAS since like 2010, and so I'm from research field. I'm a material science researcher, and the company was not willing to file under this particular category, which is a researcher category. So for 5 years nothing happened, the files were not moving. And then all of a sudden this same lawyer came back and said, why don't you try this researcher category, right? You have some papers and maybe you will get lucky. And so I said, okay. So this is around 2015. तब तक हम गुरुजी से जुड़ गए थे. महाराज जी की बहुत मेहर थी कि हमें सेवा भी मिली. And one thing I learned from seva was
चाहे आपसे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी आपको सेवा मिलती है आप उसको शिद्दत से करिए और डोंट क्वेश्चन. That is one thing that I learned from this temple. And उसके बाद जब 2015 में 16 के करीब मेरी फाइल, तो I spoke to this particular lawyer and the lawyer told me that your case is not very strong but you can try. So I said okay, let me try. And within a fraction of 3 months, long story short, I had my green card. And obviously I knew what was happening. ऐसा नहीं हो सकता कि ये coincidence है. गुरुजी की इतनी मेहर थी, गुरुजी ने मेरा ग्रीन कार्ड लाया, मेरा ग्रीन कार्ड हुआ, मेरी वाइफ का ग्रीन कार्ड हुआ, then she started working, and obviously our life has completely changed the day we stepped into this temple. This is not an understatement. This is महाराज जी की इतनी कृपा है कि चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं लेकिन गुरुजी संभाल लेते हैं और गुरुजी हिम्मत दे देते हैं. So now I'll come back to the reason Anurag uncle asked me to do a satsang today, and why this is not a coincidence is because end of April I lost my job, and this came as a shock to me. I have been working in this country. I came as a student, and even as a student I was working always. I had 2-3 jobs. लाइब्रेरी में काम करता था, इधर करता. तो मुझे काम की आदत, मुझे कभी ऐसा घर पे बैठने की वो नहीं थी. तो मुझे सबसे बड़ा गुरुजी से मैंने ये क्वेश्चन किया, गुरुजी आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, आई विल गो क्रेजी. But the company that I was working with for almost 2 years, things were going very bad over there. I was traveling, मैं यहाँ पे था, मेरी family, so I used to travel to Pittsburgh, and then it was very hectic. I gained a lot of weight. I was not able to do things normal, जो मैं पसंद करता हूँ. And it was very stressful. It was a small private equity company, very stressful. और मुझे याद है कि आई वॉज ट्रैवलिंग देयर, आई वॉज एक्चुअली ड्राइविंग, और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब कुछ कर दो बाप, मतलब ये या तो, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अदर जॉब्स. मैंने कहा या तो मुझे कोई और जॉब कर दिलवा दो, बिकॉज फ्रॉम वेयर वी कम इन वी डोंट क्विट, राइट? लाइक फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज वी डोंट रियली क्विट. हम उसमें स्ट्रगल में भी वी जस्ट कंटिन्यू एंड वी से ओके कुछ ना कुछ हो जाएगा. सो माई होप वॉज कि मुझे कहीं और जॉब मिल जाएगी, देन आई विल क्विट दिस. But that did not happen. The company, so that particular trip when I was praying to Guruji as I was driving, they basically told me that they will not need my services anymore, and I was so relieved. Like the kind of person I am, I'm a very I can be very short tempered. I can get upset and I get very animated. But Guruji ने ऐसी उस समय मैं खुद हैरान हो गया यार, this is me. I was talking to my wife, she was very worried कि आप आ जाओगे आराम से, आप मतलब चिंता तो नहीं. मैंने कहा यार मतलब मैं बहुत काम था, मैं बहुत रिलीव था, बिकॉज गुरुजी put me out of my misery. I was very miserable at that job and he put me out of my misery. And with Guruji's blessings I had 3 job offers within a month and a half. And for that matter, Anurag uncle ने जब आज बोला, तो आज the company that I'm going to join, I just had the thing from them, the background check just got cleared, so I'm going to be joining them in a week or 2 or something like that. So that's why I said nothing is coincidence in this darbar. Obviously uncle did not know all this, and मेरा भी आज ऐसे कुछ प्लान नहीं था आने का मंदिर का, लेकिन ये सब हुआ. और इसके अलावा भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं. गुरुजी ने एक चीज़ सिखाई है कि जो भी हो रहा है हिम्मत रखो उसमें और कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बिकॉज ये कर्म तो हमारे ही हैं. वी हैव डन बैड डीड्स एंड गुड डीड्स, मे बी दिस लाइफ, मे बी प्रीवियस लाइफ, वी डोंट नो. Nobody can keep calculations for these things, but you just have to believe that when you are here that he is going to take care of things. It is very difficult. We all question. मैं खुद बहुत बार क्वेश्चन कर देता हूँ कि गुरुजी ऐसा कैसे, but at the end of the day, he is like our father, he is like our mother, so we can have that kind of relationship with him. This is my जो मैंने इस दरबार में सीखा है कि हम उनसे बोल सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, मांग सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये दरबार
एक ऐसा दरबार है जहाँ पे सबकी झोलियाँ भरती हैं. मतलब we are blessed with Guruji's Pariwar. We know so many people who have come here and they have just gotten so much out of this darbar. And Guruji again सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, devotion, faith and devotion. I think those are the things that we all need to bring. And that is about it. Rest, he is going to take care of everything. I'm sure यहाँ दरबार में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें चल रही होंगी, बट हमें फेथ कर रहा है कि गुरुजी सब चीज़ों का टेक केयर कर लेंगे इन अ टाइमली फैशन. बिकॉज जब मैं यहाँ पे, जब मेरा ग्रीन कार्ड नहीं हो रहा था और जो और भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे लगता था कि मेरा ये हो जाए. हायरार्की चीज़ों की गुरुजी डिसाइड करते हैं कौन चीज़ पहले होगी, किस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आपको नहीं पता अंदर से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और आप जॉब मांग रहे हो बार बार, तो गुरुजी इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट. मे बी ही इज़ गोइंग टू क्योर यू फर्स्ट, बिकॉज हेल्थ से ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं है. सो अगेन शुक्राना गुरुजी, आपने आज मौका दिया सत्संग करने का. एंड थैंक यू नारायण अंकल, यू टू. एंड अगेन सबको गुरुजी के संगत को सबको मेरा प्रणाम और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.